Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। तुम लोग को स्क्रीन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या है। लिमिट पहले तो ये देखो कि लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट एक्सटेंडिंग टू ए if limit fx extending to a minus is equal to limit fx extending to a plus means left hand limit is equal to right hand limit, तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। but it should be noted that limit fx exists extending to a is not equal to fa exist, and fa exist is not does not imply limit extending to fx exists. But if limit fx extending to exist and is equal to fa, then it is said to be continuous at a, यानी कि वैल्यू ऑफ द लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वी मे डिफाइन द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखो डेफिनेशन क्या है। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन ए नेबरहुड ऑफ ए, then f is said to be continuous at a if given epsilon greater than 0, however small. There exists a delta greater than 0 depending upon this epsilon at the point a, such that mod fx minus fa is less than epsilon whenever mod x minus a less than delta। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। और दूसरा एक और डेफिनेशन है, a function f is continuous to the left of a if limit fx extending to a minus is equal to fa। इसी तरह से राइट ऑफ ए हो जाएगा, लिमिट ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस टू द राइट ऑफ ए इफ लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए। और एक है डेफिनेशन, if a function f is continuous at every point of open interval ab, we say that the function is continuous in an open interval ab। Next definition है, function f is said to be continuous in a closed interval ab if it is right continuous at a, continuous at every point of open interval ab and left continuous at a। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। फिर a function f is said to be continuous in a semi-closed interval ab if it is continuous at every point of open interval ab, left continuous at b, and a function is said to be continuous in a semi-closed interval ab if it is continuous at every point of ab and right continuous at a। तो ये हो गया तुम्हारा वेरियस डेफिनेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। के बाद है तुम्हारा सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कंटिन्यूटी। ये भी देख लेते हैं हम लोग, 2 पेज देख लेंगे फिर तुम लोग उसको नोट करना। देखो, ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन आई a subset of R is continuous at A in I if and only for every sequence xn in I which converges to A, the sequence fxn converges to fa। तो sequential criterion है continuity। Proof of the above statement. First, let f be continuous at A and the sequence xn converges to A. Since f is continuous at A, therefore given any epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f x minus fa less than epsilon when x minus a less than delta। This is as per the first definition of continuity। Therefore, since xn converges to A, the sequence xn converges to A, therefore by definition of convergence, there exists a positive integer m such that mod xn minus a less than delta for all n greater than or equal to m। Therefore, mod fxn minus fa is less than epsilon for all n greater than or equal to m. It implies that fxn converges to fa। Definition से fxn converge कर गया। Next, we are given that sequence xn converges to a and sequence fxn converges to fa. We have to show that f is continuous at a. Let if possible that f is not continuous at a, मान लेते हैं f continuous नहीं है, then there exists delta greater epsilon greater than 0 such that for every delta greater than 0 there exists a point x such that mod x minus a less than delta
but mod fx minus fa is greater than or equal to epsilon. Earlier, for continuity, it should be less than epsilon, but now since f is not continuous, therefore it is greater than or equal to epsilon. Take delta is equal to 1 by n, then we can find a point xn such that mod fxn minus a is less than 1 by n, and mod fxn minus fa is greater than epsilon for all n. It implies that sequence xn converges to a, but sequence fxn does not converge to fa. From here, it is clear that sequence fxn does not converge to fa. This is a contradiction, hence the function f cannot be, hence the function is not continuous is not true. Therefore, the function is continuous at x is equal to a. तो ये हो गया तुम्हारा sequential criterion. इसके बाद discontinuity of a function at a point a. A function f which is not continuous at a point a is said to be discontinuous at the point a. And discontinuity in the interval, a function which is discontinuous even at a single point of an interval is said to be discontinuous in that interval. In interval के अगर single point पे भी discontinuous है, then the function will be discontinuous in the whole interval. इसके बाद reasons of discontinuity वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे. पहले तुम लोग इसको नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछो. अब ये देखो रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी. fx is not defined at x equal to a. पहला रीजन. एंड सेकेंड है कि लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू a डज नॉट एग्जिस्ट. और थर्ड है लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू a एंड fa बोथ एग्जिस्ट. दोनों एक एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर नॉट इक्वल. तो अगर ये तीन केस है तो फंक्शन जो होगा इट विल बी डिसकंटिन्यू. अब दिखा जाए हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. फर्स्ट इज योर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. If limit fx extending to a exists but not equal to fa, then we say that f has a removable discontinuity. ठीक, यहाँ पर fa की वैल्यू अगर चेंज कर दें तो डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं. It can be made continuous by changing the value of f. Next, discontinuity of first kind. If limit fx extending to a minus and limit fx extending to a plus both exist but they are not equal, then we say that f has jump discontinuity or discontinuity of first kind. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो discontinuity of first kind. The function f is said to be left discontinuous at a if limit x tending to a minus is not equal to fa, which is equal to limit x tending to a plus fx. The function f is said to be right discontinuous at a if limit fx extending to a minus is equal to fa, but it is not equal to limit fx extending to a plus. Third discontinuity of second kind, if either left hand limit or right hand limit does not exist, then we say that f has a discontinuity of second kind. दोनों में से कोई exist ना करे. F is said to have the discontinuity of second kind from left if LHL does not exist, and f is said to have discontinuity of second kind from right if RHL does not exist. इसके बाद है mixed discontinuity. If a function f has a discontinuity of first kind in one side and discontinuity of second kind on other side, then f is said to have mixed discontinuity at a. Next, if either of the limits, limit fx extending to a minus or limit fx extending to a plus, is infinitely large, then a is said to be a point of infinite discontinuity. इसके बाद एक देख ले हम लोग sequential criterion of discontinuity. Let x be a subset of R and let f be a mapping from x to R and let small a belongs to x. Then f is discontinuous at a if and only if there exists a sequence xn in x such that xn converges to a, but the sequence fxn does not converge to
एफ ए। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूटी का सीक्वेंशियल क्राइटेरियन। अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल है, तो जल्दी से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू 4 वेयर एक्स इक्वल टू इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। देखो, limit fx extending to 2 is equal to limit extending to a value of the fx x square minus 4 by x minus 2. So it is x square minus 4 is x minus 2 into x plus 2, x minus 2 x minus 2 इसको cancel कर दिया। So it is limit extending to 2 x plus 2, this is equal to 4 and f2 is also 4. So limit fx is equal to f2 is equal to 4 means limit of the function equal to value of the function, hence function is continuous at x equal to 2। तो ये हमारा कंटिन्यूटी हो गई एट एक्स इक्वल टू 2। तो इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं जल्दी से। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड एफ एक्स इक्वल टू 6 फॉर एक्स इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस एट 3। ये एग्जांपल पिछले जैसा ही है, तुम वो अपने से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक एग्जांपल ये बढ़िया वाला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए and fx is 1 when x equal to a has this continuity of first kind at x is equal to a। देखो, since mod x minus a can be written as x minus a if x is greater than equal to a and it is minus x minus a if x is less than a, then limit fx extending to a minus will be limit extending to a minus x minus a by x minus a, x minus cancel, so it is minus 1 and limit fx extending to a plus a limit x minus a by x minus a, so this cancels, so it is 1, both limits does not exist। Therefore, LHL and RHL exist but are not equal, so the function has discontinuity of first kind। अब इसी तरह से एक एक्सरसाइज तुम्हारे लिए है। Show that fx is equal to x square if x is less than or equal to 0 and fx is f4x plus 3 if x is greater than 0 has discontinuity of first kind at x equal to 0 but the function is left continuous। ये तुम्हारे करने के लिए है, प्रैक्टिस के लिए, और इसके बाद इसमें इसको भी नोट कर लो। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे पूछो।